Hello, viewers. On behalf of ICICI Securities, I welcome you all to today's webinar on FX options, another tool to trade in currency derivatives. So at ICICI Securities, we do a lot of these webinars. It's a continuous activity for investor education. My name is Ramesh Barkhedkar, and I head currencies and commodities at ICICI Securities. It's been 14 years that currency derivatives have been trading on exchange platforms since 2008. And in the recent past, last 6 months, we have seen that it's been really volatile. We have seen 75 and we also seen 80 rupees 12 paise on the spot market. And this volatility impacts your child's education abroad. It impacts your foreign tour. So it's very important to understand about currency derivatives and also how to trade in currency derivatives. There are a lot of advantages. Like the margins required in currency derivatives is the lowest compared to all the derivatives. And it's a high leverage, obviously, as margins are low. Excellent liquidity and longer trading hours. Currencies are traded till 5 o'clock, where equities markets close at 3:30. So today we have with us Hitesh Sethia, Chief Manager, Currencies and Commodities at NSE. Hitesh has 15 plus years of experience, both in domestic and international exchanges. I've been knowing Hitesh for last 13, 14 years. And I do remember attending his one-off training programs with a book and pen. And I've learned a lot from Hitesh. And Hitesh, today also I'm having a book and a pen to learn, understand more from you. So over to you, Hitesh. Thank you, Rameshji, and thank you to the entire team of ICICI Securities. Absolutely, I'll completely agree that even I have seen the kind of webinars being done by ICICI Securities in terms of increasing everyone's practical side of markets through the right to knowing them the right side of the knowledge. It's must, and I have seen, yes, it is an important part of the overall market development exercise. So thank you, Rameshji, for today's opportunity to me. I love talking to people in terms of talking to them in terms of options, and when it comes to currency options, it is really close to my heart because I've seen currency derivative markets growing since 2008. We both have seen per se, I mean to say, and yes, options is something which is really something which needs to be understood by everyone, and not what is just being the fundamental side of the option, but the usage of options, right, in the practical world is really important. And when I say practical world, means when the markets are on, when premiums are continuously being flashed in, and it is changing, it is extremely important to understand the nitty-gritties of options. So I have a presentation. Let me share my presentation, and the today's point of discussion, which I have specifically kept, is focus towards option strategies, the currency option strategies, I mean to say, wherein I will be largely talking about three important perspectives. Number one, long synthetic. This is something which is being used by super big market participants. So जब हम बड़े market participants की बात करते हैं, then we need to understand how they work, how they act, and all three pointers which I'm going to discuss today is part of their executions. So number one, synthetic option. Under that, which is long synthetic. Okay, नाम बहुत complicated है, but trust me, it will be as simple as possible. जैसा आपने सोचा भी नहीं है. My words to everyone who's listening to me. Number two, short synthetic. पहले हमने क्या देखा? Long synthetic. Then we'll move on to the short synthetic. देखिए word में the best part of financial world is word जो होता है, जिस कोई भी चीज का जो नाम है, word है उसमें जो use हुए, even if you understand that perspective, okay, you'll be able to understand almost 50% of that part. So synthetic is something like कुछ तो बनाया गया है, right? Made per se, right? Artificially made, right? Okay, so we'll understand short synthetic with options.
That is second. And the third point which we would be discussing is and which is going to give you a different flavor of the options market if you are an options buyer. If you are an options buyer, the different flavor will be cost reduction strategy. So when I started my career, तब मैं एक ऑप्शन बायर था, ओके, और बायर के लिए वो जो कॉस्ट पे करता है, द कॉस्ट विच ही इज पेइंग इन टर्म्स ऑफ जो हम प्रीमियम पे बाय कर लेते हैं, राइट, दैट इज कॉस्ट, ओके, उसको कैसे कम करना. सेम व्यू सेम रहेगा, राइट, इधर यू आर बुलिश, यू आर बेयरिश, व्यू विल बी द सेम, बट कॉस्ट कैसे रिड्यूस करना है ये हम समझेंगे. सो 3 इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव: लॉन्ग सिंथेटिक विद ऑप्शंस, शॉर्ट सिंथेटिक विद ऑप्शंस, एंड cost reduction strategy. Okay, so let us understand, and let me also go with the presentation so that it becomes easy to visualize things. Just to put a context to the options what we are discussing. Options from a buyer's perspective, okay, is always less risky, number 1. Number 2, option writing works best with non-directional products और लेस वॉलेटाइल प्रोडक्ट. सो अगर आप ऑप्शन बेच के काम करते हैं, शॉर्ट करके काम करते हैं, सो दिस इज विथ रेफरेंस टू दैट. व्हाट इज दैट? अगर आप ऑप्शन बेचते हैं, शॉर्ट करते हैं, वो सबसे अच्छा काम तब करता है जब आप ऑप्शंस बेचते हैं. वो तब अच्छा काम करता है और उन प्रोडक्ट्स पे अच्छा काम करता है जब वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, जब कोई बहुत ज्यादा डायरेक्शन उसमें नहीं है. नंबर 3, छोटे से अमाउंट के साथ में वी कैन लीवरेज मोर विद ऑप्शंस, राइट. जैसे हम जब फ्यूचर्स की बात करते हैं, सो उसमें क्या होता है, आपको मार्जिन अमाउंट देना पड़ता है. अगर आप कोई भी प्रोडक्ट के कैश सेगमेंट की बात करते हैं, दो वी आर टॉकिंग अबाउट करेंसीज टुडे, मगर आप इक्विटी कैश की बात करते हैं, आप कोई स्टॉक खरीदते हैं तो आपको पूरा पैसा देना पड़ता है. मगर ऑप्शंस इज सच अ बेहतरीन प्रोडक्ट, it is such a wonderful product under financial world that with a small amount, right, a premium amount, okay, you can have a position in the market. Okay, आप equity cash के सामने, equity futures के सामने, equity options, तीनों को अगर कंपेयर करें, right, okay, तो आप देखेंगे options में सबसे कम आप पैसा देके positions ले सकते हैं, right. This is from buyer's perspective, and the rule applies to everyone and same for everyone. Okay, whether it is commodities options और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं करेंसी ऑप्शंस, रूल सेम है, राइट. द लीस्ट अमाउंट, right, in fact my personal perspective, if I have to speak about my personal experience and personal perspective, do remember when you want to first time enter in derivative markets, अगर आपको पहली बार आके कभी भी डेरिवेटिव मार्केट्स में एंटर करना है, सीखना है डेरिवेटिव बाजार, ओके, तो हमेशा करेंसी से स्टार्ट करिए. करेंसी से, मार्क माय वर्ड्स, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट्स particularly for retail investors. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. नाम ही इसका है ऑप्शंस, सो इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज है, देखिए, राइट. यू कैन ट्रेड कॉल ऑप्शन, यू कैन ट्रेड पुट ऑप्शन, ओके, यू कैन ट्रेड इन द मनी ऑप्शंस, यू कैन ट्रेड एट द मनी ऑप्शंस, यू कैन ट्रेड आउट ऑफ मनी ऑप्शंस. यू हैव सेवरल स्ट्राइक्स ऑफ नियर मंथ, you have weekly options, near month options, next month options, so on, so on. So options is full of options. You only need to have a clear view and understanding कि मुझे क्या करना है, and everything with options can be easily translated. When I say translated means what? When I say translated means what? Translated मतलब जैसे आपका व्यू है, थोड़ी तेजी आएगी, a little bullish sentiments you have, okay, that can be translated in options. आपको लग रहा है, you know, substantial तेजी आएगी, substantial bullish sentiments will prevail, okay, that can also be translated in options, right. आपको लग रहा है मंदी आएगी या बड़ी मंदी आएगी, both can be translated, the bearish sentiments can be translated from both the perspectives, right. आपको लग रहा है that something is going to happen, you're not clear about direction, but you know that something is going to happen, that can also be created with options. आपको लग रहा है मार्केट एक रेंज में रहेगा, right, you can't do it with futures but you can do it with options. आपको लग रहा है ये रेंज जो है ये बड़ी रहेगी या छोटी रहेगी, both the things can be translated in options. आपको लग रहा है मार्केट बुलिश रहेगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, that can also be translated in options. आपको लग रहा है यहां से यहां तक मंदी रहेगी, right, that can also be translated. So options gives you a flexibility, right. Why? Because उसमें उसका नाम ही options है, इतने सारे options है आपके लिए करने के, right. Okay, और जैसे हम सब जानते हैं
कि ऑप्शंस में बायर जो होता है उसको कोई मार्क टू मार्केट देने का जरूरत नहीं है, एक बार उसने प्रीमियम दे दी, दैट्स इट, नो मार्क टू मार्केट फॉर द ऑप्शंस बायर। ओके, और भी बहुत सारी चीजें की जा सकती है ऑप्शंस के साथ में, दैट्स व्हाई राइट आप आगे आने वाले दिनों में भी देखेंगे दैट मोस्ट ऑफ द लिक्विड प्रोडक्ट्स ऑन द एक्सचेंजेस आर नथिंग बट द ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पर्सपेक्टिव, बट बिफोर स्टार्टिंग लेट मी गिव you know important side of buying a call option, right? So when you want to buy a call option, मैं पांच scenarios create किया हूं, and a very very quick understanding we are going to take out of it, okay? Because the objective is you should understand when to be a buyer of an option, right? मुझे जब when I go talk to people, I have realized over a period of time that people have a right directional view, right? But they don't know when to use options. देखिए, options is just an instrument and it has to be used along with a view. आपका कुछ व्यू होना चाहिए। देखिए, व्यू कुछ भी हो सकता है, you can have bullish view, you can have bearish view, you can have a consolidated view, but व्यू होना जरूरी। और अगर व्यू है तो आपको ऑप्शन सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। So what is in front of you? Suppose this is the USD INR line, right, which I'm drawing out here. Markets are currently at this point जहां मैंने एक राउंड बनाया। ओके, पांच चीजें हो सकती है। प्राइस कैन गो स्ट्रेट अप, प्राइस दैट मींस नथिंग बट द एक्सचेंज रेट, द एक्सचेंज रेट गोज अप बट विथ अ लेसर मोमेंट। नंबर 3, द एक्सचेंज रेट गोज इनटू कंसोलिडेशन। नंबर 3, नंबर 4, exchange rate goes down, okay, and number 5, exchange rate straight away goes down with a lot of momentum, velocity, speed, whatever you call this. So 5 scenarios can happen. Now if I buy a call option, right, and if case 1 happens, scenario 1 happens, right, that means I bought a call option and immediately exchange rate went up, rupee started depreciating a lot, right, a lot. In that case, yes, my trade will be a winning trade, right, and definitely it will be in profits, right? However, right, if the rupee starts depreciating but with a lesser momentum, I may be a winner. I'm not sure, but I may be a winner, because if the momentum is slow, right, अगर धीरे धीरे जा रहा है एक्सचेंज रेट ऊपर, तो आप देखेंगे वो जो प्रीमियम है, राइट, वो टाइम डीके के कारण उतना नहीं बढ़ेगा। तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट आई हैव जस्ट स्टिल कंसीडरिंग इट एज इन दैट यू मे बी अ विनर इन दिस केस। ओके, अगर एक्सचेंज रेट वहीं रह जाता है, यूएसडी एक्सचेंज रेट एक बहुत ही कंसोलिडेटेड रेंज में चले जाता है, राइट, देन दिस विल बी काउंटेड एज अ लूजिंग ट्रेड फॉर मी। नंबर 4, if exchange rate starts going down, that means rupee started strengthening, okay, right, this is going to be a losing trade, okay, and case 5, definitely it is going to be a losing case, right? So what I'm trying to say is जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है मेरा बात, और यू हैव टू रिमेंबर फॉर ऑलवेज, एंड नॉट, इट इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल टू करेंसी ऑप्शंस। आप कमोडिटी ऑप्शंस ले लीजिए जो एनएससी गोल्ड मिनी ऑप्शंस ट्रेड हो रहे हैं, राइट, या आप इक्विटी ऑप्शंस, इंडेक्स ऑप्शंस, इंडिविजुअल सिक्योरिटीज ऑप्शन, आई मीन टू आप ले लीजिए। रूल इज रूल फॉर ऑप्शंस, व्हाट, व्हेन यू आर क्वाइट श्योर that case 1, scenario 1 is going to happen, then you should buy a call option. In all other 4 scenarios, my practical experience and also looking to the option dynamics, you should avoid buying a call option. आपको लग रहा है, जिसको हम बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, there is going to be a breakout आएगा ऊपर की तरफ, राइट? ऐसे सिनेरियोज में जब ब्रेकआउट आने वाला है, ऐसे समय पे कॉल ऑप्शन खरीदना ही ज्यादा अच्छा होता है। आपको लग रहा है मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगा या धीरे धीरे ऊपर जाएगा, माय रिक्वेस्ट, अवॉइड बाइंग कॉल ऑप्शन, राइट? और वैसे ही केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, इसमें आपको कॉल ऑप्शन नहीं खरीदना चाहिए, राइट? इसका उल्टा भी मैं आपको बोल के बताऊंगा वेरी क्विकली अबाउट दिस, कि अगर आपको लग रहा है आप एक जंक्शन पे खड़े हैं और आपको लग रहा है कि जोर से प्राइस नीचे चले जाएगा, रुपीज गोइंग टू अप्रिशिएट सब्सटेंशियली बाय अ रुपी और 2 और समथिंग लाइक दैट, ओके, दैट मींस केस 5 इज गोइंग टू हैपन। इन दैट केस, जो हम बोलते हैं एक मेजर सपोर्ट लाइन ब्रेक कर दिया है, ब्रेक डाउन हो गया है, राइट, समथिंग रिलेटेड टू इट, ओके, जब आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि जोर से एक्सचेंज रेट नीचे जाने वाला है, रुपी स्ट्रेंथन होने वाला है, right, in that case you should buy a put option, else you should not buy a put option,
राइट? कॉल ऑप्शन तब खरीदना है व्हेन यू आर श्योर अबाउट दैट प्राइसेस, द एक्सचेंज रेट is going to go up, is going to be bullish with a lot of momentum, velocity, and speed, right? And if and when you should buy a put option, when you are expecting momentum, speed, and velocity of exchange rate going down will be quite higher. In such cases, you should buy a put option. Otherwise, options मत खरीदिए. Try to win option writer. बेच के काम करना भी सीखिए. थोड़ा करिए मगर होता है, right? Okay. और इस समय ये जो एक्सचेंज रेट है आपने अभी देखा हुआ 80 के आसपास जाके वोलेटाइल हो जाता है. आई एम श्योर माय वर्ड्स कैन आल्सो बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स व्हेनेवर यू वांट टू बाय ऑप्शंस. सो डिफाइन इट. मुझे कब क्या करना है ये आप डिफाइन करिए जो मैंने आपको बताया है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डिसिप्लिन्ड अप्रोच यू शुड बाय ऑप्शंस. ओके, चलिए एक कॉस्ट कंपैरिजन आपको फटाफट बता देता हूं. बहुत ही ग्रे एरिया से मैं लिया हूं, राइट? सेम लेवल पे लिया हूं. अगर मैं ऑप्शंस के 100 कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड करता हूं तो मैं इसमें ब्रोकरेज इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, बट इसके अलावा जितने भी चार्जेस हैं, 100 कॉन्ट्रैक्ट्स बॉट, 100 कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड. याद रखिए ब्रोकरेज जो है वो ब्रोकर का पर्सपेक्टिव होता है, सो आई कांट एक्सप्लेन बिकॉज आई एम फ्रॉम द एक्सचेंज इंडस्ट्री साइड. 82.8 रुपीज अगर आप 100 कॉन्ट्रैक्ट्स 1 रुपए की प्रीमियम पे लेते हैं और बेचते हैं, राइट? आपकी प्रीमियम इतनी ज्यादा होती नहीं है, आपकी प्रीमियम लगभग 50 पैसे के आसपास होती है, 40 पैसे के आसपास होती है, तो और भी कम हो जाता है बिकॉज ऑल दिस ट्रांजेक्शन चार्जेस आर बेस्ड ऑन दैट वैल्यू, राइट? टेक्निकली ऑन एन एवरेज बेसिस में बोलूं सो लगभग 45 रुपीज ऑन 100 कॉन्ट्रैक्ट इज दी स्टेट्यूटरी चार्जेस. इसके अलावा जो है दैट इज योर ऑप्शंस ब्रोकरेज. ओके, और यही चीज जब आप फ्यूचर्स में करते हैं सो वही चीज फ्यूचर्स में कोई प्रीमियम नहीं होता है, सो डायरेक्ट आपका जो ट्रांजैक्शन होता है वो फ्यूचर्स की प्राइस पे होता है. ओके, इट कम्स टू 174. तो अगर मैं कंपेयर भी करूं, राइट, 1 रुपया प्रीमियम लेके कंपेयर करूं, वैसे 50 पैसा प्रीमियम लेके करना चाहिए, अगर मैं 1 रुपया लेके भी करता हूं तो 82 और 174 बहुत बड़ा फर्क, राइट? सो ट्राई टू स्टार्ट टेकिंग एन एडवांटेज ऑफ करेंसी ऑप्शंस, राइट? और इसीलिए अगले स्लाइड से हमारा फोकस ऑप्शंस पे रहेगा कि हम फ्यूचर्स कैसे क्रिएट करें, राइट? मैं बुलिश हूं, मेरे को फ्यूचर्स लेना है, बट फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा खर्चा लग रहा है. 174 रुपीज मेरे को खर्चा लग रहा है 100 कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर. सो मैं फ्यूचर्स को कैसे रिप्लेस कर दूं ऑप्शंस के साथ में? सो पहला पार्ट, रिप्लेसिंग फ्यूचर्स विद ऑप्शंस, एंड वेरी वेरी इफेक्टिव. सो रूल नंबर 1, इसको कहा जाता है सिंथेटिक पोजीशंस, राइट? हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्यूचर्स बना रहे हैं, नकली फ्यूचर्स मतलब सिंथेटिक फ्यूचर्स बना रहा हूं मैं, राइट? और किसके साथ में बना रहा हूं? ऑप्शंस के साथ में, जो बिल्कुल फ्यूचर्स की तरह चलेगा. देखिए, आप सिर्फ कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, मार्केट ऊपर गया तो क्या होगा? थोड़ा थोड़ा वो बढ़ने लगता है, पूरा नहीं बढ़ता है, राइट? थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, राइट? प्रीमियम जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा. तो लोगों को रहता नहीं, मैं फ्यूचर्स में अगर ट्रेड कर लिया होता तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट्स होते, राइट? सो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ऑप्शंस के साथ में ऐसे कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, यूज करेंगे कि हमारा फ्यूचर्स बन जाएगा. सो फर्स्ट इज कॉल्ड एज लॉन्ग सिंथेटिक, राइट? तो अगर आप लॉन्ग है मतलब मान लीजिए 80 का एक्सचेंज रेट चल रहा है और आपको लग रहा है ये ऊपर चले जाएगा, सो आप क्या करते हैं? फ्यूचर्स, मैं बोलता हूं मत करिए फ्यूचर्स, वेट, राइट? व्हाट यू कैन डू इज आप लॉन्ग सिंथेटिक फ्यूचर्स बना सकते हैं. कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है. रूट बाय स्टेप लेट अस डिस्कस. क्या करना है? 80 का अगर एक्सचेंज रेट चल रहा है सो 80 का ही, दैट मींस एट द मनी, क्या करना है? एट द मनी का कॉल खरीदना है और इमीडिएटली पुट बेच देना है. 80 का कॉल खरीदा और इमीडिएटली 80 का पुट हमने बेच दिया, राइट? ये दो पोजीशन जैसे ही आप साथ में क्रिएट करेंगे, ना, इन दोनों से बनने वाला आउटकम जो रहेगा वो फ्यूचर्स का आउटकम रहेगा. मतलब ये बिल्कुल वैसे चलेगा जैसे आपका फ्यूचर्स चल रहा है. मतलब अगर ऊपर जाएगा, राइट, अगर फ्यूचर्स ऊपर गया, यहां से 15 पैसे ऊपर गया, तो आप देखेंगे आपको प्रॉफिट भी इस पोजीशन से है 15 पैसे जैसा आएगा. क्यों आएगा? आपने कॉल लिया है, उसका प्रीमियम बढ़ेगा, और पुट जो शॉर्ट किया है उसका प्रीमियम कम होने लग जाएगा, राइट? तो क्या हुआ? डबल इंपैक्ट आ गया हमको, और जैसे ही 2 इंपैक्ट साथ में आए वो फ्यूचर्स बन गया हमारा, राइट? तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन फ्यूचर्स को रोक सकते हैं इन द सेंस उसको साइड में रख देते हैं, बोलते हैं नहीं, ऑप्शंस करते हैं. कैसे करेंगे? फ्यूचर्स मेरे को लॉन्ग करना था, कॉल खरीदा और इमीडिएटली उसका पुट बेच दिया, राइट? और सेकंड जो है वो है शॉर्ट फ्यूचर्स. अब अगर आपको लग रहा है एक्सचेंज रेट जो है 80 के ऊपर नहीं जाएगा,
राइट? ओके, आपको लग रहा है एक्सचेंज रेट इज द INR इज गोइंग टू स्ट्रेंथन, राइट? एक्सचेंज रेट बेरिश सेंटिमेंट्स में आ जाएगा, राइट? तो आप शॉर्ट फ्यूचर्स करने वाले थे, मैं आपको बोलता हूँ वेट, शॉर्ट फ्यूचर्स अभी मत करें, एक काम करते हैं, ऑप्शंस के थ्रू शॉर्ट फ्यूचर्स बना लेते हैं। हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट, राइट? हम लोग 80 का एक्सचेंज रेट चल रहा है, 80 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे। नाउ दिस टाइम बिकॉज यू आर बेरिश, राइट, पुट बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे और कॉल सेल कर देंगे, सेम स्ट्राइक प्राइस। पुट बाय किया, कॉल सेल कर दिया। जैसे ही हम ये करेंगे, जैसे ही हम करेंगे, राइट, सो क्या होगा, हमारा एक शॉर्ट सिंथेटिक फ्यूचर बन जाएगा, जो बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, कैसे, फ्यूचर्स की तरह। सो 80 पे आपने शॉर्ट किया और मान लीजिए वहां से 23 पैसा 25 पैसा नीचे आ जाता है एक्सचेंज रेट, राइट? तो क्या होगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट नीचे आया तो पुट जो आपने बाय किया है उससे प्रॉफिट आएंगे, प्लस क्योंकि ये नीचे आया है कॉल भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। सो समेशन ऑफ बाइंग अ पुट एंड सेलिंग अ कॉल, बाइंग अ पुट एंड सेलिंग अ कॉल, ये आपका बिल्कुल फ्यूचर्स की तरह वर्क करने लग जाएगा, राइट? ओके, मगर अब क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत सिंपल हो गया। दूसरा चीज जो मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, ये दोनों पोजीशंस साथ में करना है, साथ में करना है, मतलब कॉल खरीदा, पुट बेचा, लॉन्ग से थे, ऐसा नहीं अभी कॉल खरीद लिया फिर हम वेट कर रहे हैं, नहीं। टू पोजीशन नीड्स टू बी created simultaneously. Number 2, right, both the position needs to be squared off simultaneously. ये दोनों पोजीशंस जो है, इसको स्क्वायर ऑफ भी जो आपको करना है वो साइमल्टेनियसली करना। अब क्वेश्चन आता है कि ये तो बहुत सिंपल हो गया, कर लेंगे, नहीं। देखिए, हर चीज को करने का एक तरीका होता है, देयर इज अ वे टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग, राइट? तो अब मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा और आपको बताऊंगा कि ये कैसे वर्कआउट होगा, है ना? देखिए, वी विल नाउ स्टार्ट प्लेइंग विद नंबर्स। सो नंबर्स का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, विच यू नीड टू अंडरस्टैंड विद मी, एंड उसका पहले मैं फंडामेंटल बताऊंगा और फिर उसका एक एक्सेल के साथ में एप्लीकेशन साइड बताता हूं, ठीक है? ओके, नाउ जब भी आप ये करें, सो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग फ्यूचर्स। लॉन्ग फ्यूचर्स कैसा किया है हमने, कॉल बाय किया है, पुट सेल कर दिया 80 पे, राइट? अब सोचिए 50 पैसा प्रीमियम था कॉल का और 50 पैसा प्रीमियम था पुट का। 50 पैसा कॉल का प्रीमियम, 50 पैसा पुट का प्रीमियम, राइट? गुड। अगर आप दोनों 50-50 पैसा पे है, आपने कॉल खरीदा, पुट बेचा, राइट, और 80 की स्ट्राइक प्राइस थी, तो हम बोलेंगे 80 पर ही आपका फ्यूचर्स क्रिएट हो गया। बट समझिएगा, मैंने कॉल खरीदा 50 पैसे में, ओके, 50 पैसा is the premium for which I have bought a call. And when I was selling futures simultaneously, the futures was at 55 paisa. The futures was at 55 paisa. कॉल कितने में था, 50 पैसा, पुट बेचा 55 पैसा। अब हुआ क्या, 5 पैसा मेरे को एक्स्ट्रा आ गया, 50 पैसा गया क्योंकि मैंने कॉल खरीदा, 55 पैसा मेरे पास आ गया, राइट? तो मेरे पास टेक्निकली 5 पैसा है। ये 5 पैसा ना आप स्ट्राइक प्राइस में से माइनस कर दो, स्ट्राइक प्राइस में से माइनस कर दो। सो व्हेन यू डू दैट, व्हाट कम्स टू, हमने 80 की स्ट्राइक प्राइस ली थी, 50 पैसे में कॉल खरीदा, 55 पैसे में कॉल बेचा, राइट? 5 पैसा बचा, उसको स्ट्राइक में से माइनस कर दो, 80 minus 5 paisa, which comes to 79.95. Now what this number is, 79.95. This is the synthetic futures price. ये क्या है, ये सिंथेटिक फ्यूचर्स का प्राइस हो गया। सिंथेटिक फ्यूचर्स का प्राइस हो गया मतलब आपकी फ्यूचर्स की जो पोजीशन क्रिएट हुई है ना, राइट, वो 80 पे नहीं हुई, 79.95 पे हुई। मतलब पूरा मार्केट फ्यूचर्स को देख रहा था और उस पे 80 पे बाइंग सेलिंग कर रहा था, बट आपकी पोजीशन जो क्रिएट हुई है वो 79.95 पे। बट अब क्वेश्चन आएगा कि ये 5 पैसा मुझको कब मिलेगा, राइट? सो व्हेन यू कैरी आउट योर पोजीशन टिल एक्सपायरी, तो ये 5 पैसा आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट की तरह, एक्स्ट्रा एडवांटेज की तरह काम करेगा। सो मैं वापस रिपीट करता हूँ, फ्यूचर्स 80 पे था, आपने फ्यूचर्स नहीं बाय किया, आपने कॉल खरीदा, पुट बेच दिया। कॉल 50 पैसे में खरीदा, 55 पैसे में यू हैव सोल्ड द पुट, okay, 5 paisa you got it, you immediately deducted this 5 paisa from 80, which was your strike price, which comes to 79.95. What is this 79.95? So technically, when you talk to any of your friend, tell them that I was able to create a I was able to create a long synthetic futures, not at 80. When everyone was creating at 80, I was able to create it at 79.95.
दुनिया से 5 पैसा सस्ता आपने खरीदा है, राइट? मैं नहीं बोलता हूं हमेशा ऐसा अपॉर्चुनिटी आता है, बट इवन 2-3 पैसा भी आप सस्ता खरीदते हैं तो ये बहुत ही अच्छा, ये क्या करेगा, ये आपके वो 2 या 3, अगर 3 पैसा भी आपने बचा लिया, सो 3 पैसा, राइट, ये आपकी कॉस्ट में से माइनस हो गया है, right? What else we want? So many trades in a year you take. With every trade, if you are able to say 2-3 paisa, 2-3 paisa, right? Your cost of transaction and everything, right, is practically being covered out, right? And every single, do remember, कभी कभी 2 पैसा 3 पैसा बोलने में बहुत छोटा होता है, but practically speaking, this 2-3 when you combine it, right, that you have saved with every transaction you have been able to save something, like 2-3 paisa, right? At end of the day it becomes huge. Every single penny saved is accounted as your profit practically in the market, right? Second, जब आप शॉर्ट सिंथेटिक क्रिएट करते हैं, शॉर्ट सिंथेटिक आप क्रिएट करते हैं, कैसे करेंगे? हमने पुट खरीदा, कॉल बेचा, इसमें भी रूल वही है। देखिए, फंडामेंटली समझिए, जब भी आप कुछ खरीदेंगे और जब भी आप कुछ बेचेंगे, राइट, हमने पुट खरीदा इसमें और कॉल बेचा, कॉल महंगा होना चाहिए, उसकी प्रीमियम ज्यादा होनी चाहिए। आई हैव पुट इन दैट एज इन माय स्लाइड एज वेल, दैट हेजिंग बिकम्स मोर इफेक्टिव एंड शॉर्ट्स आर हेवियर देन लॉन्ग्स, राइट? तो अगर हमारा शॉर्ट साइड कॉल महंगा था, मैंने 50 पैसे में पुट खरीदा और कॉल 55 पैसे था, 55 पैसे था, उसको बेच दिया, दिस 5 पैसा विल बी एडेड टू माय स्ट्राइक प्राइस। नाउ जिसे कॉस्ट लॉन्ग में हमारा कम हुआ था 5 पैसा, यहाँ पे हम ज्यादा प्राइस पे बेच पाए, सो पूरा दुनिया 80 पे बेच रहा था, राइट? ओके, बट वी हैव बीन एबल टू सेल एट 80.05. दिस एक्स्ट्रा प्रीमियम विच वी आर रिसीविंग, राइट, हैज टू बी एडेड। सो अच्छा है ना, हमने ऊपर के भाव में बेच पाए। सो whenever we want to go short, the entire market was using short with 80, but we have been able to create a short position at 80.05, and this is going to help you. Just to put it in context, very quickly, right? Creating a long futures, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये long futures का पे ऑफ है, कैसे किया है? कॉल बाय किया है, ये सेकंड इज पुट शॉर्ट किया है, एंड दिस इज इक्वल्स टू योर फ्यूचर्स, दिस इज इक्वल्स टू योर फ्यूचर्स, अ स्ट्रेट लाइन, लॉन्ग फ्यूचर्स। सेम वे लॉन्ग पुट शॉर्ट कॉल, ओके, लॉन्ग पुट शॉर्ट कॉल, राइट, ये कुछ नहीं है, ये आपका शॉर्ट फ्यूचर्स क्रिएट कर दिया है, शॉर्ट, राइट? नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर डिस्कशन, राइट, विथ एन एग्जाम्पल, कॉस्ट रिडक्शन स्ट्रेटेजी। सो मैं एक रिटेल क्लाइंट हूं, मैं ऑप्शंस बाय करके चलता हूं, और जब मैं बाय करके चलता हूं, सो आई एम प्रैक्टिकली पेइंग अ प्रीमियम विच इज कॉस्ट टू मी, राइट? ठीक है, प्रॉफिट्स आ जाते हैं, बट एक कॉस्ट पे करना पड़ता है। अब क्वेश्चन आता है कि मैं ये कॉस्ट कैसे कम कर सकता हूं? मेरा व्यू क्लियर है, व्यू कैसा हो सकता है? आई कैन बी बुलिश, आई कैन बी बेरिश, ओके, मेरा व्यू क्लियर है, बट द प्रॉब्लम इज मैं इतना हेवी कॉस्ट पे कर देता हूं दैट प्रैक्टिकली रिड्यूसेस माय प्रॉफिट्स। अब 50 पैसे का कॉल ऑप्शन आपने खरीद लिया, मतलब आपने 50 पैसा दे दिया है किसी को, यू हैव पेड दैट अमाउंट। तो आपका प्रॉफिट जो भी आएगा, आप जिस भी प्रीमियम पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, दैट -50 पैसा विल बी योर प्रॉफिट। सो फॉर ऑप्शन बायर्स, मेरे जितने फ्रेंड मुझे सुन रहे हैं, जितने भी ऑप्शंस बायर्स हैं, उनके लिए पहले हमने क्या समझा था इन माय फर्स्ट स्लाइड ऑफ डिस्कशन, कब आपको कॉल खरीदना चाहिए और कब पुट खरीदना चाहिए, उसके अलावा आपको नहीं खरीदना चाहिए ऑप्शंस, उसके अलावा आपको शॉर्ट करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि मैं खरीदना चाहता हूं, मेरा व्यू भी है, व्यू कैन बी बुलिश और बेरिश, बट द प्रॉब्लम इज इतना बड़ा प्रीमियम देके खरीदता हूं, सो गलत भी हो सकता हूं मैं, और व्हेन आई गो रॉन्ग इन ऑप्शंस, right, it is not limited loss. Books talks about a limited loss, but practically speaking the entire premiums gets wiped out, okay, right? पूरा का पूरा प्रीमियम जो है वो चला जाता है, right? So a full amount, right, is being accounted as loss. So हमको वो प्रीमियम जो है उस पे बात करना है। अब वो प्रीमियम तो डेफिनेटली मार्केट ड्रिवन है, मार्केट ड्रिवन पे प्रीमियम पे मैं कैसे कॉस्ट रिड्यूस करूं, राइट? इसका एक बहुत छोटा सा अच्छा तरीका है, लेट अस अंडरस्टैंड, ओके? देखिए, 80 का स्ट्राइक प्राइस, 80 का प्राइस चल रहा है मार्केट में, एट द मनी की मैं बात कर रहा हूँ, 50 पैसा प्रीमियम है, लेट्स से नेक्स्ट मंथ का, नॉट द करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ का ये 50 पैसा प्रीमियम चल रहा है, मैं 50 पैसे का कॉल ऑप्शन खरीदता हूँ, दैट मीन्स टेक्निकली आई हैव पेड 50 पैसा फ्रॉम माय पॉकेट, राइट? ओके, एंड आई एम गोइंग टू होल्ड दिस पोजीशन। मैं बोलता हूँ मैं मेरा पोजीशन 1 महीना सपोज मैं चलाता हूँ,
राइट? ओके, नाउ मेरे व्यू के हिसाब से एक्सचेंज रेट एक महीने बाद 81 हो गया. सो वन ईयर डाउन लाइन, सॉरी 1 month down the line, the exchange rate reaches to 81. In that case, what will happen? Financial settlement will happen, right? 80, 81, 1 rupee difference minus premium, my profit will be 50 paisa, right? Cost paid 50 paisa, got 1 rupee, so the difference is 50 paisa is my profit, right? So I have only got 50 paisa. Why? Because I paid a cost. Now, इस cost को कैसे reduce करना है? चूंकि you are bullish, so use a rule of 1/4. Use a rule of 1/4. What is 1/4? 1/4 मतलब आपकी जो प्रीमियम है उसका 1/4 निकालिए. आपकी प्रीमियम कितना है? 50 पैसा. करेक्ट? 1/4 निकाला हमने. What is 1/4? 1/4 of 50 paisa, right? So approximately it comes to 12.5, 13 paisa. Let's say 13 paisa मैं बोलता हूँ, 13 पैसा. So एक पुट ऑप्शन आपको बेच देना है. पुट ऑप्शन बेचना मतलब you're bullish. कौन सा बेचना है, राइट? कौन सा बेचना है? यू कैन रिड्यूस द कंप्लीट कॉस्ट, राइट? कितना? 1/4 कॉस्ट भी हमने रिड्यूस कर ली तो भी हमारा 13 पैसा एक्स्ट्रा बच जाएगा. सो ऐसा स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करिए. दिस इज पर्टिकुलरली फॉर करेंसीज, राइट? पर्टिकुलरली फॉर करेंसी ऑप्शंस, यूएसडी एंड आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, सो आप ऐसा स्ट्राइक प्राइस पुट में सिलेक्ट करिए जो थोड़ा नीचे का हो, दैट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ मनी, और 13 पैसे 12 पैसे के नजदीक में हो, राइट? सो क्या हुआ? हमने वो पुट ऑप्शन बेच दिया. पुट ऑप्शन बेचना मतलब बुलिश सेंटीमेंट्स है, मैंने कॉल खरीदा है, और ये दोनों साथ में नहीं किए, अलग अलग स्ट्राइक्स पे किए, राइट? कॉल खरीदा 80 वाला, 79 का पुट बेच दिया 13 पैसे, राइट? आप जाके चेक भी कर सकते हैं. टुडे 54 पैसा एंड 13 पैसा इज एक्चुअली द प्रीमियम ऑफ अक्टूबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट, राइट, ऑन द एनएससी प्लेटफॉर्म. ओके, सो आपने क्या किया? एक खरीदा, एक बेचा. अब जो खरीदा, राइट, उसका प्रीमियम यू हैव पेड, ओके, और पुट का प्रीमियम यू हैव रिसीव्ड, राइट? पुट बेचना. सो ओवरऑल यू आर वर्किंग एग्जैक्टली लाइक व्हाट? बुलिश है, कॉल खरीदना, पुट बेचना, दोनों बुलिश सेंटिमेंट्स को वर्कआउट करते हैं, राइट? ओके, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा, अब मान लीजिए 81, सेम एग्जांपल मैं लेता हूं, 81 हो गया. अगर 81 हो गया तो क्या होगा, राइट? योर प्रॉफिट फ्रॉम कॉल ऑप्शन विल बी 50 पैसा, बट पुट ऑप्शन 0 हो जाएगा, right? This will add your further profits. This will add to your further profits. So 13 paisa आपको extra और मिल गया. Why? Put you have sold, that gone down to 0. 13 paisa becomes 0. So extra profit. So what's coming? इस बार आपको 63 पैसा मिला है, right? 63 पैसा मिला है, right? But do remember, चूंकि आपका व्यू बुलिश था, आपने कॉल लिया, पुट बेच दिया. You have to keep a stop loss. You have to keep a stop loss, and mark my words, your stop loss should never below the strike price of put option. It should never be below strike price of put option, right? तो क्या हुआ? हमारा 13 पैसे से कॉस्ट कम हो गया. व्यू बिल्कुल क्लियर है, मुझे पता है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने रिसर्च कॉल दिया है ऊपर जाएगा, राइट? और मुझे दोनों बाजू से कमाना है. मेरे को सिर्फ कॉल खरीद के नहीं कमाना है, मेरे को पुट ऑप्शन बेच के कमाना है. सो कंबाइन इट, बट याद रखिए सेम स्ट्राइक पे नहीं करना है. स्प्लिट कर दिया है हमने, राइट? स्प्लिट कर दिया है. एक एट द मनी ले लिया जो फटाफट एक्सेलरेट होगा, और एक पुट ऑप्शन बेच दिया जो धीरे धीरे एक्सेलरेट करेगा, बट मुझे प्रॉफिट आना ही चाहिए, राइट? दैट्स द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. और ज्यादा आना चाहिए, और ज्यादा तभी आएगा ना जब मेरा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा, राइट? सेम वे, द लास्ट पॉइंट फॉर टुडेज डिस्कशन, दैट इफ यू हैव अ बेयरिश व्यू, इसका उल्टा करना है. एट द मनी का पुट बाय करना है, और आउट ऑफ मनी का कॉल बेच देना है. सेम रूल ऑफ 1/4. जो 50 पैसा अगर मेरा प्रीमियम है, 1/4 कॉस्ट मेरे को रिड्यूस करना. देखिए ज्यादा कॉस्ट रिड्यूस करने मत जाइएगा, अदरवाइज योर स्टॉप लॉस गेट्स इजीली ट्रिगर्ड, वो पास में आ जाएगा आपका स्ट्राइक. ओके, सो 1/4 से ज्यादा कभी भी अपन को कोशिश नहीं करना है. एज एन ऑप्शन बायर, यार मेरा 1/4 कॉस्ट रिड्यूस हो गया ना तो भी बहुत है, राइट? ओके, सो क्या करना है? पुट ऑप्शन खरीदना है, 80 का पुट ऑप्शन, राइट? ओके, और आउट ऑफ मनी का ऐसे वाली स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है कॉल की जिसका इसका 1/4 प्रीमियम वो बेच देना है, राइट? सो डायरेक्ट 25% जो है वो आपका सेव होना शुरू हो जाएगा, राइट? सो दैट इज द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड द ऑप्शन साइड एज एन बायर. ऑप्शन बायर, मैं मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव बताता हूं रमेश जी. ऑप्शन बायर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बट सिर्फ 2 ही चीज चाहिए मुझको.
एक अगर मैं जैसे आपका क्लाइंट हूं तो मैं बोलूंगा मेरे को पहले रिसर्च का कॉल भेजिए क्या है, राइट। और दूसरा मुझे पता होना चाहिए कि ऑप्शन को कैसे मुझे यूज करना है सही तरीके से। इट इज नॉट बुलिश हूं तो कॉल खरीद लीजिए, बेरिश हूं तो पुट खरीद लीजिए, राइट। आई नीड टू अंडरस्टैंड, सी ऑप्शंस में इतनी स्ट्राइक्स क्यों दी है, इसलिए दी है सो दैट पीपल कैन यूज देम टुगेदर एंड इफेक्टिवली, right? So that's the end of my part, sir. uh, Tried my best. I'm sure people will take an advantage of it, right? Back to you, sir. Thank you, Hitesh, for that wonderful presentation. And I keep telling that Hitesh is one of the best trainers across India for currency derivatives. And I also believe, Hitesh ji, that currency derivatives or currency options are the best for the first time option trader, because the capital required is small, contract size is small, and one can try different strategies here. And USD INR is the most liquid contract. So one can just focus on USD INR, look at different strikes, work out on these different strategies, because same thing can be replicated in other segments also, like commodities and currencies. And at NSE, the volumes have been growing multifold. And today, options contribute almost 76% of notional volume on NSE. So I don't think there's any dearth of liquidity there. And Hitesh, thank you for explaining so well to our customers when to buy options, when to sell options. And I'm sure there's a lot that our customers can take home, how large traders trade by using synthetic options. And when you are mentioning about 5 paise or 3 paise, it might look small, but currency derivatives are highly leveraged products. 33x is what is the leverage on currencies. So even this 5 paise with leverage, it's a big money. Other thing what I wanted to highlight is initially it's good to start with 1 lot, 2 lot, 5 lots to understand. But currency is a volume game, because you'll be able to see big money or once you start trading larger lots. And most of the customers are buyers, and your cost reduction structure strategies will definitely help them to be a better trader, right? And few things at ISEC which I wanted to highlight. So here you can see on ICICIdirect.com currencies page, we have a currency brokerage calculator. So you can just calculate before you take your trade, what can be the risk, what can be the reward. Here on NSE options, you can see USD INR. As Hitesh also mentioned, there's a monthly option, there's a weekly option. There's a weekly option of 23rd of September, which is expiring. I have taken a call option, which is the strike price 79 rupees 75 paisa. I buy at a premium of 21.25 and I sell at 21.50. Just one tick, 30 lots, I'll be profitable. So this includes brokerage, this includes regulatory cost, it includes everything. So what I mean to say is the regulatory cost, which is the lowest in currency derivatives. There is no STT, there is no CTT. So the entry and exit is pretty easy. With every tick, one will be profitable in currency options if at all that tick is favorable. Similarly, on futures also, even though the cost of transaction is higher, with 2 ticks, one will be able to make money in currency futures. So that's what I wanted to highlight on brokerage calculator. Similarly, once you log in, we also have a margin calculator where you can put different strike prices, different lugs, and see what is the margin required in trade. Apart from this, just brokerage of rupees 20, we also have research reports. We come out with daily report, weekly report, monthly report, which will help you to trade. And most importantly, we keep coming out with our research recommendation calls in iClick to Gain, and it gives you a direction when to buy, when to sell. So that's all I had to share from my side. Hitesh ji, thank you once again. And I hope this presentation will help our customers, traders to understand currency derivatives, currency options better, and be a better trader. Thank you. Thank you so very much for joining us. Thank you, sir. Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing. Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from ICICI Direct.